अथ प्रथमचरित्रः। ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नन्दा शक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्, अग्निस्तत्त्वं, ऋग्वेदस्वरूपम्। श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः, शङ्खं सन्धदतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां, नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां शेवे महाकालिकां, यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यथेष्टमः, निशामयतदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम स्वाहा। महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः, स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वाहा। स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः, सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले स्वाहा। तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान्, बभूवुः शत्रुवो भूपाः कोला विद्वंसिनस्तदा स्वाहा। तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः, न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः स्वाहा। ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवतु, आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः स्वाहा। अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः, कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः स्वाहा। ततो मृगया व्याजेन हृतः स्वाम्यः स भूपतिः, एकाकी हयमारुह्य जगामगहनं वनं स्वाहा। स तत्राश्रवमद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः, प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं स्वाहा। तस्थो कञ्चित् सकालञ्च मुनिना तेन सत्कृतः, इतश्चेतश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे स्वाहा। सोचिन्तया तदा तत्रा ममत्वाकृष्टचेतनः, मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् स्वाहा। मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा, न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदा मदः स्वाहा। मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते, ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः स्वाहा। अनुवृत्तिं ध्रुवन्तेऽद्यः कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम्, असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं स्वाहा। सञ्चितः सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति, एतच्छान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः स्वाहा। तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः, सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र स्वाहा। सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे, इत्याकर्णवचस्तस्य भूपतेस्प्रणयोदितं स्वाहा। प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपं स्वाहा। वैश्य उवाच। समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले स्वाहा। पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः, विहीनश्च धनैर्दारैर्पुत्रैरादाय मे धनं स्वाहा।
वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहन्न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां स्वाहा प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किन्नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किन्नु साम्प्रतं स्वाहा कथं ते किन्नु सद्वृत्तां दुर्वृत्ताः किन्नु मे सुताः स्वाहा राजोवाच यैर्निरस्तो भवां लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः स्वाहा तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं स्वाहा वैश्य उवाच एवमेतत्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः स्वाहा किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः एष्यन्त्यद्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः स्वाहा पतिस्वजनहार्धं च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते स्वाहा यत्प्रेमप्रमणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते स्वाहा करोमि किं यन्मनसस्त्वेष्वप्रीतिषु निष्ठुरं स्वाहा मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रा तं मुनिं समुपस्थितौ स्वाहा समाधिर्नाम वैश्यौसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदं स्वाहा उपविष्टो कदाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ स्वाहा राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् स्वाहा दुःखाययन्मे मनसः स्वचित्ता यत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि स्वाहा जानतोऽपि यथाग्नस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्ततोज्झितः स्वाहा स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ स्वाहा दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागा यन्मोहो ज्ञानिनोरपि स्वाहा अमास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता स्वाहा ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे स्वाहा विषयश्च महाभागा याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्थास्तथा परे स्वाहा केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्तु ते न हि केवलं स्वाहा यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां स्वाहा मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गान् चावच्छञ्छुषु स्वाहा क्षणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषामनुजव्याघ्रा साभिलाषाः सुतान् प्रति स्वाहा लोभान् प्रत्युपकाराय नन्वैतान् किन्न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः स्वाहा महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः स्वाहा महामाया हरैश्चैषा तया सम्मोह्यते जगतो ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा स्वाहा बलादाकृष्य मोहाया महामाया प्रयच्छति
तया विसृज्यते विश्वं जगते तच्चराचरं स्वाहा सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी स्वाहा संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी स्वाहा राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् स्वाहा ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा स्वाहा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर स्वाहा ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं स्वाहा तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा स्वाहा उत्पन्नेति तथा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्गजत्येकार्णवीकृते स्वाहा आस्तीर्यशेषमभजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदाद्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ स्वाहा विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः स्वाहा दृष्ट्वा तावसुरोचौग्रौ प्रसुप्तं च जनार्थनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः स्वाहा विबोधनार्थाय हरे हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं स्वाहा निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः स्वाहा ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका स्वाहा सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः स्वाहा त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा त्वयेतद्धार्यते विश्वं त्वयेतत्सृज्यते जगत् स्वाहा त्वयेतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्त्ये च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने स्वाहा तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः स्वाहा महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी स्वाहा कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा स्वाहा लज्जा पुष्टिस्तदा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा स्वाहा शङ्किनी चापिनी बाणा भुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेषा सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी स्वाहा परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके स्वाहा तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् स्वाहा सोऽपि निद्रावशं नेतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च स्वाहा कारितास्ते यतोस्तस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैस्वैरुदारैर्देवि संस्तुता स्वाहा मोहयैतौ दुरादर्शा वसुरो मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु स्वाहा
बोधश्चक्रियतामस्या हन्तु मेतौ महासुरौ स्वाहा ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा स्वाहा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः स्वाहा निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्थया मुक्तौ जनार्थनः स्वाहा एकार्णवे हि शयना ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावति वीर्यपराक्रमौ स्वाहा क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जिनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः स्वाहा पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणौ विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ स्वाहा उक्तवन्तो वरोस्मत्तौ व्रियतामिति केशवं स्वाहा श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वद्यावुभावपि स्वाहा किमन्येन वरेणात्रायेतावद्धिवृतं मम स्वाहा ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् स्वाहा विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता स्वाहा ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः स्वाहा एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्य देव्यास्तु भूयुः शृणु वदामि ते स्वाहा ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः समाप्तः।